There is any problem with audio? Actually, some students are saying that we are not audible on YouTube. सर लेकिन पता नहीं ये वाला ऑडियो शायद YouTube पे नहीं आ रहा है। जी सर। Any problem with audio? Actually, some students are saying that we are not audible on YouTube. जी सर, आ रहा है, ऑडियो भी आ रहा है। यस सर, प्लीज करिए। सर लेकिन पता नहीं ये वाला ऑडियो शायद YouTube पे नहीं आ रहा। जी सर। हेलो। हाँ सर। अब आपने क्या क्या कर लिया सर? हाँ जी सर, आ रहा है, ऑडियो आ रहा है। चलो मैं कॉलेज ही आ जाता हूँ, है ना? यस सर, प्लीज करिए। ठीक।
French people, because cinema was the invention of French primarily. Also in USA, cinema was came into a different form, which was known as kinetograph machine. But cinematograph was always superior than kinetograph. That is why this the first inventor of cinema, the tag was bestowed upon Lumiere brothers or the French. Now, the first film which was shown before public was that film was known as A Train Coming in a Paris Station. And the impact was fascinating, hilarious, that the people who were watching that film suddenly jumped up from their seat and disappeared from the tent where the cinema that image was being shown. Because they never saw before that a moving image, a cinematic image, and they suddenly found a train is coming towards them from the screen, and they were scared and they jumped up from their seat and left. So that is also another important thing, that the first cinema which was shown was made on a train, moving train, on a moving train. That is also very significant, because this shows to us how cinema was implicitly related to technology. Train, automobile, and train particularly is a very important invention in our industrial world. Without train, without steam engine, and particularly then without train, railway, no industrialization was possible, because train is the most important thing which carried people and goods from one part to the another part. And you also, if you just look at the British Empire, one important thing, most important aspect on which British rulers were interested was to establish or set up railway in India. That was very important. So cinematic art, is from the very beginning is related to technology, and it is helped by technology. It used technology to create art form. The technology gives cinema a magical power too, that makes cinematic art a magnificent thing, because that two images are merged together. Sometimes we watch a horrible face come suddenly before camera. Sometimes through editing, a horrible street accident is shown on the camera. We are horrified. That is the magical power which was given, the technology which the technology has given to cinema. Cinematic art was perfectly blessed by technology and science. That is why cinema, later became a very important entertainment for our everyday life. Why? Because in our everyday life, we use technology and science every moment. And we love cinema in a sense that it is somehow related to this kind of modern living system. And that is why in our unconscious, we love cinema as it is related to our everyday life, as it becomes the part of our everyday life. Some theoreticians of cinematic art, they observe cinema. According to them, cinema performs two roles basically. One role is the role of a microscope, and another role is the role of a telescope. Sometimes when we watch a landscape which is far from us through a telephoto lens, we actually perform a telescopic purpose. Sometimes when we watch a face or an object from very close, the camera comes very close to observe for example,
an insect. Camera comes very close to observe a wrinkle on the face. That is related to the purpose of a, almost like a purpose of a microscope. So that is why even the theoreticians who theorize cinematic art, according to them, cinema is somehow basically performs the role of microscope and telescope in our everyday life. We don't need to go to laboratory. If we watch a cinema, we can find these aspects of things which we observe in telescopic and microscopic work. A camera functions in that way in human life. Okay, it's a very good morning, nice morning. I think it's sunny and bright morning in your part of the country too. Let us watch a very small film, a 10 minutes film made by a filmmaker. I'm writing the name of the filmmaker in the chat box. He is, this filmmaker is from Holland. Holland, you know, is a country of Europe, and Holland is famous for the tourists because there are several lakes and water bodies in the country, and you know, very many water resource engineering experiments took place in Holland. Holland is famous also for that. So this Bart Anstra, he is a filmmaker from Holland. He made a film called Glass in the year 1958. That is a fascinating film, and the film uh, uh, shows a glass factory, a 10-minute, 30 seconds film. The film shows a glass factory and very nicely organized images, how a glass factory is run, how glass is made out of its raw material, and how the technology, the skills of the labor, the technological ideas, concept work together, and a very interesting consortium of artistic imagination, technology, and human skill we observe in the film. I just give the YouTube link of the film to you, and Professor Patel, you just help us to watch the film. Look at the chat box, please. The link of the film is given there. It's a 10-minute, 30 seconds film. Professor Patel, can you hear me? Professor Patel? एनएस पटेल सर, आप सुन पा रहे हैं? एनएस पटेल सर, I will ring him. Yes. Okay, okay. I'm sending the WhatsApp to you. Yeah.
Just a second. Uh, okay. Yeah, Professor Patel, I have sent the link to you. You can. Okay. Professor Patel is trying to run the film on YouTube, and before that, we just continue talking about things. You know, this kind of development of cinema uh, was born in Europe, that is very much, pretty much related to technology, and technological achievement is very important to us. You know, yeah, yes, sir. Hello, sir. I have sent the link to you in WhatsApp. Okay, 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 okay. Yeah. In a minute, I think Professor Patel will run the film. Okay, and now this development of cinema, after it was developed in Europe, it went to USA, Hollywood. You know that after the First World War and Second World War also, the Europe was destroyed, completely devastated. So the technological development, the studios and huge development in Germany, Italy, France, they were just destroyed. And from that point, that cinema went to Hollywood and became almost a property of Hollywood. But before that, Hollywood cinema, the problem of it is that it became an entertainment cinema. But the problem is that this finer achievements of Europe were missing in Hollywood cinema. Hollywood cinema became a family entertainment where these technological aspects of cinema was covered up by some aesthetic aspects. You know that Hollywood cinema uses huge technology, lots of technology, huge money was invested on technology. But if you watch Hollywood cinema, you can find that the as if the cinema is very smooth and a family entertainment, as if it is a very very easy flowing game. Hmm. The Europeans, on the other hand, always used European filmmakers most of the time. They made films in a very interesting way, particularly in Holland, in East European countries, and in former Russia, Soviet Union. In 1920s, cinema was very precisely linked with technology. Cinematic artists were known in
Soviet Russia and that part of the world as artist engineer, an engineer who is involved in an art form, and the knowledge of engineering and technology becomes very important in that way. Uh, uh, is the film already on stream? हाँ पटेल सर, फिल्म उधर दिखा पा रहे हैं या यहाँ से यस सर, शेयर? अच्छा अच्छा लोड हो रहा है सर, मैं यूट्यूब में ही शेयर करके दिखा देता हूँ। हाँ हाँ जी सर, जी सर, जी सर। हाँ हाँ सर, यूट्यूब में आ रहा है, फिल्म जा रहा है। हाँ हाँ चल रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ग्लास, ठीक है ठीक है। हाँ, वो फिल्म ऑन करने से मेरे को एक नोटिफिकेशन दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, आफ्टर दैट फिल्म आई विल स्टार्ट अगेन। ओके 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 सर। So sir, let them watch the film, and after that, after 10 minutes, I will resume again my lecture. पटेल सर स्टार्ट हो गया उधर? हाँ हाँ, पटेल सर का साथ बात हो गया, स्टार्ट स्टार्ट हो गया, फिल्म चल रहा है यूट्यूब में। जी सर, जी सर।
पटेल से स्टार्ट हो गया क्या फिल्म? घोष सर, जैसे पटेल सर बोल रहे हैं उधर फिल्म चालू है तो कुछ उसके सपोर्टिंग में कुछ बोलना है तो नरेशन देना है या उसको चलने दें पूरा? नहीं, चलने दीजिए. Few minutes after I will ask to stop the film and I will conclude lecture, my lecture. Just चलने दीजिए.
Yeah, sure. Right, right, right. So, thank you, Professor Patel, for running the movie in the YouTube. And I think the students, you have watched 5 minutes of the film. Rest of the film, as Professor Patel told us, that it will be shared in the chat box, and you can watch it as per your convenience later. So now come to our contemporary time, that digital era. How digital era helped us in different way in our life too, and the cinema too. Digital technology democratized different things for us the people of cinema, for us the people of art. Digital technology in a huge sense democratized it. How? That the earlier days, technology, any kind of technology, was very far from our life where it is produced. Who is producing it? The engineers are producing it. It's produced in the factory. The people, lots of people, skill and knowledge was required. But in the era of digital, some of the technologies and many of it has come to the grip of common people. Everybody of us, we use a computer. Everybody of us, we use a cellular phone. Everybody of us has some basic knowledge. Many of our students, younger generation, they have excellent knowledge on technology, software and technologies, apps, softwares. It's fascinating. And at the same time, the art forms were benefited by this digital development of digital technology, as it is, as that every mobile phone has a camera. Everybody of us has a camera. And that the cinematic art form has also completely changed all over the world. There are big films, but on the other hand, there are small films made by students, made by common people, made by younger generation. They are making their films and they are screening it through YouTube. They are screening it through other alternative media. So it's a very interesting kind of development all over the world, that digital technology not only makes our life easy, but digital technologies makes the art forms available to everybody, makes everybody artist. And in that sense, technology liberated us from, in many senses, technology democratized art forms which were far from us once earlier, which were earlier far from us, which was earlier out of our uh, kind of grief, that came to us in that sense. So my argument to the students is that don't watch this, though don't consider art and technology as two completely separate way of looking at life. Hmm. There are mergers, there are interactions, there are kind of interfaces between technology and art. You can be interested in doing something innovative, which is technological innovation as well as artistic innovation. Uh, Thank you. And here I stop. And if you have any question, I will answer your questions.
Sir. Till now, I have not seen any questions in the chat box. Yeah. Because if you may just guide the students, can what aspects they may be careful while preparing short documentaries, etc., from their mobile phones or from the gadgets which they have these days. Okay, first of all, we have a problem is that with that uh, too much democratization of technology creates a problem to us also. We must be careful to that, as Professor Agarwal is hinting that that sometimes we observe that technological use has come to our bedroom, come to our drawing room in such a way that our private life is sometimes exposed in it, and sometimes it has become too much private. My opinion is that keep yourself away, or be aware that that a film or a documentary film that must not be too much personal and too much private. Rather, as you know, that I have heard from professors before I start that your university is doing many activity things. Professor Tripathi, Brijesh Tripathi elaborated some of these activities to us, that you can make short documentaries on technological achievement, development. Sometimes some of the technological aspects which are unknown to common people, the students, technology students, can make short documentaries on some of the technological aspects, how they're helping people, how they come to help, as many of our technological institutes. I have heard from Kharagpur IIT, one professor from there, that with the humanities department they were making a very interesting venture where this camera, digital technology, digital camera is used to to aware about technology in the communities which are known as backward in a sense, the part of the society, our fellow citizens who are somehow slightly backward in the use of technological knowledge, or how to use a community life through the awareness of technology. You can make short documentaries, 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, and that will help society a lot. Thank you, sir. One student has asked how we can shoot cinematographic shots by the smartphones. If any apps are there, then can you please suggest apps to edit them? There are many apps. You can use the basic apps. I am not very aware of those apps because I'm not I'm not specialized in editing, but you can use apps or things. But the if you have an iPhone, or you can get an iPhone from your friend, or borrow an iPhone, that will be very helpful, because iPhones are made for uh, film shooting and editing. Mm. So regarding editing apps, my knowledge doesn't go too far, so I cannot help in that sense. But you can start practicing grabbing images, and Premiere Pro mobile version, Android version is there. It's a slightly heavy app, heavy kind of software app, but you can use the mobile version, Android version of Premiere Pro.
That is the most basic and widely used mobile editing technology, digital editing technology. And the benefit of it is that if you use this app, it can be compatible to many other formats. Sometimes the uncommon apps are not to be used by the beginners, because uncommon apps sometimes the end product, the outcome comes in a very new kind of uh, medium, which are higher than MP4 and a complicated kind of outcome that do not match in all playing devices. Or it, so for the beginners, for the beginning purpose, you can use the basic apps like Premiere Pro. Sir. One question student has written that any help or any guidance how to give audition of acting. One Devan Sharma just asked how to give audition of acting. That you have to approach different now nowadays, that people go to different production houses and drop their CV. Sometimes you can email them to different production houses, but for acting, my suggestion is uh, perform in theater. Yeah, you must be associated with theater first. That is the best forum for learning acting. And then drop your CV to any production house. Thank you very much, sir. And if you wish to add anything, otherwise, I wish to say my gratitude on behalf of the Rajasthan Technical University, Kota, and on my personal behalf also. I am thankful to Professor Manas Ghosh for sparing his time from rather hectic schedule and guiding our students. Students are writing now. Say one student is asking Kanishk Singh, what are courses related to these activities? Hmm. Yes. Say whatever you have spoken, if any courses are there which are related to these activities, one student wish to know. Kanishk Singh. Hmm. Uh, in India, there are two very famous government institutes run by Ministry of Human Resource Development. One is Film and Television Institute, Pune. They run a full-fledged diploma of 3 years of film technology and filmmaking. Many engineering and science degree holders, they prefer for cinematography department, for sound department, particularly sound engineering department, they prefer the students with engineering knowledge, graduation in engineering knowledge. Also, there is another institute in Calcutta in memory of famous filmmaker Satyajit Ray. This is known as Satyajit Ray Film and Television Institute. So they organize a combined joint entrance test for these two institutes, combined test, and after that test, they run a workshop, and after the workshop, on the basis of workshop performance, they finally select the students. Or if you can learn it online, there are many institutes now in last few months, they came into being. One very important institute is New York Film Institute. They have also launched a basic filmmaking course on online.
you can also search for that too. One student has written, what would be better variation of angle or change of frame in cinematography shots? What would be better variation of angle or change of frame in cinematography shots? Right. Abhishek. Oh, that's really a good question. Abhishek is already into cinema, I think. So, thank you for asking the question. First of all, Abhishek, you have just try to understand that what you are doing, how to change a frame or angle of shot. There is no shortcut method or formula of doing that. First of all, you watch films. For example, you are making a film on a urban space, right? For example, you are documenting a film on urban space. Best way to learn how to change a frame or a short angle is to watch the films available in YouTube on urban spaces and learn them by yourself. Huh? Some elements you cannot learn. Some elements you cannot learn with a priorly given formula. My suggestion is that don't get bothered too much about this kind of specific uh, artistic aesthetic thing. Hmm. Aesthetic you can rebuild in cinematic art on editing table. So don't bother too much on it. You learn it by yourself and try to think which camera angle, which frame is suitable for a particular subject while you are shooting. And just rely upon your own judgment. That will enhance your confidence as well as you can pass through an experiment with your own judgments and decisions. And you know that today's world, in the digital film, after the coming of digital film, uh, these artistic aspects do not carry much weightage. People are not interested about very sophisticated artistic or aesthetic things in today's world. But more than that, the people are interested about certain new and innovative things. Try to do that. Thank you, Professor Ghosh sir. Our Dean sir, Professor Anil Mathurji, has also joined. So I request Dean Faculty Affairs, Professor Mathur sir, to say a few words. Good morning. Good Good morning, morning, sir. everyone. So, first of all, I would like to convey my thanks to Professor Manas Ghosh Thank you, from sir. our mentor institute, and is very kind enough to accept our invitation on a short notice that this program is being organized for 1 week induction program for our first year students. So, I am thankful to Professor Ghosh. I am also thankful to Professor Praveen Kumarji, Professor Anil Mathurji, for this 1 week induction program of first year students. And I came to know that number of students have shown their keen interest and share their videos, share their pictures regarding this induction program. And I suppose that this is a very good initiative by our faculty members, and students have shown their ability and their expertise other than the academics, which is also required nowadays, because simply academics is not good, but one should have interest in other activities like sports, Right. painting, dancing, and and I'm also thankful to our participants, our first year students, and their parents who have joined us on YouTube.
And for live telecast on YouTube, I'm thankful to our TechU faculty, Narendra Singh Patel and Nirmala Sharma and other faculty members. Thank you very much. Thank you, Professor Ghosh, sir. Thank you, sir. We are very much grateful that your talk has aroused interest in our students. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I request Professor Mathu sir to enlighten our students about civil engineering branch, because familiarization of different branches is one key point in the induction program. So I request Professor Anil Mathu sir to kindly familiarize our students with the civil engineering, the core branch of the engineering. Thank you, sir. Sir, Thank you. may I leave the meeting, or should I? Sure, Yes, sure. sir. Okay. Thank you. So thank you very much. Thank you, Professor Ghosh, once again. Thank you very much. Thanks, sir. So, dear students, I have been given the responsibility to share the departmental activities of Civil Engineering Department. प्रवीण जी दिख रही है PowerPoint presentation? हाँ सर दिख रहा है सर. So, in our institute, the oldest department, our institute, as I have told yesterday or on the inaugural day of induction program, that our college, Engineering College Kota, started with 3 branches in 1981, civil, mechanical and electrical. So it is one of the oldest branch of our institute, and it is also the oldest branch of engineering also, because civil engineering, mechanical and electrical, these were the 4 branches in the initial stages. And in our civil engineering department, I welcome all the students and their parents in the department of civil engineering. The vision of our institute is to be an eminent institute of technical education and research through academic excellence and innovation to serve the needs of industry and society. This we have discussed on the inaugural day also. Mission of the institute is to provide quality education with focus on practical knowledge and ethics, to maintain a student support system for their professional growth, to complete globally, to promote an environment which is conducive for innovation, entrepreneurship development, and research. Vision of our department is to be a resource center for imparting in-depth knowledge for shaping infrastructural development to meet the societal needs of the region. This is vision of civil engineering department, and mission. We have 3 missions of our department. To impart the quality education with due emphasis on ethics and social commitments. Second mission is to foster research and development in prominent and emerging areas. And third one is to interact with industries and promote consultancy services to develop professional engineers. This is entry of our civil engineering department. As you must be knowing by now that we have number of different academic departments. First block A is of Department of Electrical Engineering and Department of Electronics Engineering. Block B is Civil Engineering Department. Then similar block C is of Mechanical Engineering Department. Block D is for HES department, that is Applied Sciences and Humanities. And we have a separate new building for computer and IT department also. I am head of the Department of Civil Engineering. We have just concluded the Golden Jubilee celebration of our institute with a sense of achievement and accomplishment. Since the Civil Engineering Department has all along contributed not only in providing the academic excellence, but also in building the basic infrastructure of this great institute. Therefore, there would not be a better time to engage in introspection and put together our achievements as well as our
to resolve engage with challenges of future in view of rapidly changing needs of the environment of our society. We have a very rich faculty members. We have very rich departments in terms of manpower, that is faculties, and we have rich resources in terms of equipments, availability of equipments also. So first of all, I'd like to introduce you with our faculty members. I'm Dr. A.K. Mathur. I'm professor and head in civil engineering department, and my specialization area is environmental engineering, water resources, and hydraulics. Next is our senior professor, Dr. B.P. Suneja. His specialization in the PhD is structural engineering, and area of his research interest is earthquake resistant construction and disaster management. Then we have Professor J.K. Sharma. He is specialized in geotechnical engineering, and his research area is rock engineering, GI techniques, stabilization techniques, soil structure interaction, deep foundation, and environmental geotechniques. Then we have Professor A.K. Dwivedi. His specialization is in construction management and structural engineering, and the area of research interest is construction management, bridge engineering. uh, with this, I would like to share that Dr. B.P. Suneja, besides his job of professor, is Dean Faculty of Engineering and Architecture of Rajasthan Technical University. Dr. A.K. Dwivedi was earlier controller of examination of RTU, and he is NCC officer also. And those who are interested in participating in NCC, you may contact Dr. A.K. Dwivedi. Then we have Dr. Praveen Kumar. He's professor again in department. His specialization is in structural engineering, and the area of research interest is concrete technology, behavior of structural members, and repair of structural members. And I suppose now everybody knows him very well. He's also looking after the charge of chief proctor. So every student must be familiar with him. Is a very kind-hearted person, and he will be helpful to every student regarding admission activity, their scholarship, and so many other activities. So kindly be in contact with Dr. Praveen Kumar. Then we have Professor Rajesh Singhal. His specialization is in geology, and his area of research interest is hydrogeology. He is the chief warden of our institute, and those who are interested in residing the hostels, he may contact Dr. Rajesh Singhal when the institute opens. Then we have Professor Dr. Ajay Bindish. His specialization is in geotechnical engineering, and area of research interest is ground improvement and rock engineering. Then we have Professor K.S. Grover. His specialization is structural and geotechnical engineering, and his area of research interest is concrete technology, technical engineering, and his area of research interest is concrete technology, soil classification, and foundation engineering. Then we have Associate Professor Dr. C.D. Prasad ji. His specialization in geotechnical engineering, and his research area is fiber reinforced compacted fly ash fills. Then again we have one more Associate Professor Dr. Biswajit Acharya. His specialization is in geotechnical engineering, and his area of research interest is soil dynamics. Then we have two more Associate Professor Dr. M.P. Chaudhary. His specialization is in environmental engineering, and area of research interest is in water treatment and wastewater management. Then we have Dr. Vaibhav Garg. His specialization is environmental engineering and geotechnical engineering, and area of research interest is geotechnical engineering and ground improvement engineering. Then we have four assistant professor. Suresh Nagar. His specialization is structural engineering, and area of research interest is in concrete technology and engineering. Then we have Mr. S.K. Saini. His specialization is in transportation engineering, and area of research interest are sustainable pavement construction incorporating non-conventional materials. Then Mr. S.K. Tak. His specialization is building science and technology. Area of research interest is structural engineering, impact mechanics, and projectile impact loading. Then we have one more assistant professor, Mrs. Pinky Meena.
Her specialization is transportation engineering and area of research interest is transportation engineering. I am happy to share that most of our faculty members are having PhD degree from prestigious institutes of country. And these four assistant professors, Mr. Suresh Nagar, Mr. S.K. Saini, Mr. S.K. Tak, and Mrs. Pinky Meena, these four are pursuing their PhD work in different IITs, and now at present they are on study leave at IITs, and soon they will be back to join our department. Then we have four more faculty members, four more young and energetic faculty members from TechU. Mr. Sohil Sisodia, his specialization in environmental engineering and area of research interest is watershed modeling, water quality modeling, cumulative environmental impact assessment, and low impact development. Then we have Mr. Madhusudan Agarwal. His specialization is in hydraulics and area of research interest is also hydraulics. Then we have Mr. Sasank Avasthi. His specialization in structural engineering and area of research interest is also structural engineering. And Mr. Aditya Dangi, his specialization in transportation engineering and area of research interest is also transportation engineering. These four faculty members, Mr. Sohil's research interest is also engineering. These four faculty members, Mr. Sohil Sisodia, Madhusudan Agrawal, Shashank Avasthi, and Aditya Dangi, are TechU faculty members. They are very dynamic and young faculty members. Those students, they are really interested in other activities in academics. They can also contact them. Similarly, other than faculty members, we have number of supporting staff to help all the students in different labs and also office staff in our department. The program educational objective of civil engineering graduates will work as a responsible engineer to contribute towards society with professional obligation. They will continue to learn to harness evolving technologies as part of an organization or as an entrepreneur, to pursue higher education for professional development, and the graduate civil engineering graduate will function as an efficient leader and encourage the teamwork for managing the projects effectively and economically. Here we go to the civil engineering department. This is a picture of entry of block B, civil engineering department. Then just when you enter in this gate, this is the view of civil engineering department, where on left and right we have parking spaces, and we have two floors on almost all blocks A, B, C, D, ground floor and first floor. This is another view of entry of civil engineering department. This is ground floor of civil engineering department, where we have number of different labs, different classrooms, tutorial rooms, and sitting arrangement for few of faculty members. This is our office of civil engineering department, where students needs to contact our office for their regular work. This is first floor of civil engineering department. On first floor also we have number of classrooms and number of labs and few rooms for our faculty members. This is again first floor. You can see this room number be 209, 210, 212, 213, 214. These are for our faculty members. And we have number of laboratories, as I have told you earlier, that we are very rich in the resources in terms of laboratory equipments. We have number of labs. The few important labs are one is survey lab, computer lab, then we have skill development center lab, environment lab, geotechnical lab, geology lab, hydraulics lab, material testing lab, concrete testing lab, and road material testing lab. So during this tenure of 4 years, every student will go in different labs as per their timetable, and you have to perform number of experiments in different labs. This is civil engineering, material, and geology lab. These are the number of experiments which you have to carry out, not in first year, but after first year, in second year, third year, and fourth year. This is a view of geology lab, where you will study about different types of stones and their characteristics.
In survey lab, we have to perform number of equipments, and it is a very old lab of civil engineering department. We have number of advanced equipment also in our lab. One most important equipment which is mostly being used by the site engineers for surveying, that is total station. We have also automatic level, and we have number of theodolites also. We have electric theodolite, we have leveling staff. So we have number of equipments in other lab also. Say RMT lab is road material testing lab, where you have to perform the different types of experiments related to the material of which is being used in roads, maybe stone or other. These are the number of tests. These are the equipments in road material testing lab. Again, these are the Benkel mean beam and other equipments available in road material testing lab. This is Los Angeles abrasion testing machine, and you can see students are performing experiments on these equipments in their regular classes. Then we have structural engineering lab. Again, we have number of 9 or 10 experiments. These are the equipments available in structural engineering lab. Then we have geotechnical lab. In geotechnical lab, you have to perform various experiments related to soil and its characteristics. These are the important machines available in geotechnical lab, which is direct shear testing machine, penetrometer, CBR test machine, hydraulic instruments, well pressure test, permeability test, and so on. Then we have hydraulics lab or fluid mechanics lab. In this lab, we have to perform various experiments on water related to water. This is force vortex apparatus. Then we have metacentric height apparatus, Bernoulli's equation, and so on. We have number of equipments in hydraulics lab. Then we have concrete technology lab, in which we perform the test on concrete. I suppose everybody knows about concrete because most of our houses are constructed with concretes. We have J-ring apparatus, U-box test apparatus, slump cone test apparatus, sieve analysis apparatus, and advanced digital weighing machine. We have microprocessor based pH meter also in the environmental engineering lab. This is one of another lab, important lab in our department, where we have number of equipments also, and we have number of eminent alumni working all over country and even abroad also. And just for the information of your students and their parents, in last month we have organized an online alumni meet of civil engineering department for 2 days, in which number of our alumni who are working in Australia, USA, New Zealand, in other, and Bangalore, Bombay, they have joined us online, and it was a very successful event where our old faculty members also joined and our alumni also joined, and we have a nice interaction with our alumni and our alumni has ensured us to support our new students for their job placement or for their higher education in abroad or in India. This is Tushar Mittal, is founding and managing director of Studio One Ventures, and he has generously come forward for the development of Tushar Mittal Hall in our civil engineering department. Thank you. Once again, stay safe and healthy. Thank you, Professor Mathur sir. Besides this, I would like to inform the students that besides Btech courses, our civil engineering department also runs MTech courses in 3 disciplines. One is structural engineering, then environmental engineering, and geotechnical engineering. And besides MTech, also we are having PhD program in both these 3 disciplines: geotechnical, structural engineering, and environmental engineering. And around 9 to 10 students have completed their PhD in our department, and probably 100 of students have completed MTech from civil engineering department, and many students are pursuing their MTech and PhD courses
regular or on part-time basis from civil engineering department. So I am thankful to all the students. Thank you. Thank you, Mathusal. A nice depiction of all the labs and other facilities available for civil engineering branch students. I request now Professor S.R. Kapoor, sir, Head Electrical Engineering, to enlighten our students about the electrical engineering branch. Professor Kapoor, sir. Thank you, sir. Good morning, everybody. Dean Faculty Affairs, Mathur sir, Chief Proctor P.K. Agarwal sir, present faculty members, and my dear students. I feel privileged to present a presentation on electrical department amongst you. So let me present my screen. Sir, is the presentation visible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ कपूर साहब दिख रहा है जी sir. So in our electrical department, we have the undergraduate, postgraduate and the PhD programs, the full-time and the part-time PhD programs we run in our department. We have the Btech electrical engineering, which was started in 1981. So we are one of the oldest departments of the university. And we have Mtech in two streams, which is power system and power electronics and electric drives. So we have one Btech course, we have two Mtech courses, and we have the PhD program running in our department. Our department established in 1981, and it is one of the oldest departments of the institute. We have Mtech in power system, and our Mtech program in power system, it was provisionally accredited by NBA in 2016. And presently we have our Btech program, which is accredited by National Board of Accreditation in 2019. We are a QIP center for the PhD course. We have more than 200 plus Mtech theses and dissertations completed by our PG students in our department. Almost 12 PhDs have been awarded in electrical engineering department, and presently we have 56 research scholars enrolled in our department. We have 21 faculty members in our department. 12 faculty members are PhD. 5 faculty members have done their PhD from IITs. 11 faculty members have their education from IITs, and we are NB accredited, and we are a QIP center, and we have rich research publications also in our department. This is the vision and the mission of the department. Our mission is to offer electrical engineering course that augment the liberal education expected from students and to impart basic understanding of electrical engineering to students, built on the foundation of physical science, mathematics, computing, and technology, to help the students to possess the knowledge of fundamentals of electrical engineering and specialty area, preferably related to needs of industry and research. We always try to inculcate the highest level of morality and ethics amongst the students so that they become an asset to the country and the society. The vision of our department is to promote specialized knowledge in the field of electrical engineering, along with interdisciplinary awareness, and to develop a framework to support the communicative and ethical needs of industry and society at global level. Our program educational objectives are, as they have been shown on the screen. We would like to assist the students to outperform in academic applications to industry, technical profession, and research through rigorous education. To deliver the students with a solid foundation in mathematical, scientific, and engineering required
to develop primary and advanced levels of understanding in areas related to electrical engineering, to inculcate in students professional and ethical attitude, effective communication skills, teamwork skill, multidisciplinary approach, and an ability to relate engineering issues to broader social context, to provide students with an academic environment that will succor them to become aware of the latest state-of-art technologies in the relevant discipline and make them capable of comfortably using the befitting computer-aided techniques to become a successful professional. This is the undergraduate, the details of the undergraduate program. We have the institute core course with 54 credits, institute elective course, which we say is IEC of 10 credits, then department core course of 112 credits, department elective courses of 16 credits, and extracurricular activity and discipline 8 credits. Basically, I would like to introduce you with these terms because too often the students would be coming across all these terms like what is ICC, Institute Core Elective, or IEC and DCC, the credits, what does this credit mean? So too often the students would be coming across all these terms. So you must be familiar with all these terms. Now the process we follow to improve the quality of the teaching and learning in our department is depicted in this slide. We have an academic calendar which is strictly followed, and this academic calendar is announced by the Chief Proctor Office. The faculties, they plan their lecture according to the academic calendar. The course coordinator decides how the syllabus is to be completed before each exam, and accordingly we act. And whatever the faculty they plan, the lecture plans, they are disseminated amongst the students through our local departmental website. We have pedagogical initiatives where we try to value the effective communication skills, and people from variety of the backgrounds, they are made to interact with the students. We try to cultivate in the students the sensitivity and social awareness which is necessary for building good working relations regardless of the difference in culture, religion, and gender. We try to build up a very good environment for teaching and learning. We try to make the students culturally aware. The curriculum development activities are there. Learning diversity we also focus on. So this is how we try to improve and provide a good quality education to the students. This is how we focus on conducting the experiments in our labs, because conduct of the experiment is a very important part of the engineering curriculum, and so is it in electrical engineering also. So each batch is divided into number of groups. So in each group we have 15 to 20 students who come together in the form of a group in the lab, and they perform the experiment. And then the group members, they perform the experiment throughout the semester. The following tasks are performed by each group sequentially. They refer to the manual. They go to the setup of the instrument and experiment under the guidance of the lab instructor. They perform the experiment, take the readings, make the observation tables, do all the calculations, and then they present the results, which is to be signed by the faculty. A regular assessment is carried out for each experiment, which includes viva, maintaining a regular practical file, and others as per requirement of the practical. So here I would request all the students to be sincere and regular in performing the experiments. Presently, the labs are not being held due to the COVID situation, but whenever the situation permits, the regular experimentation would be there in the lab. So you must be very regular in doing these experiments. The marks for the practical exam is given on the basis of attendance, performance in the lab, and practical file. The internal examination, it consists of the midterm,
Two midterms are mandatory in each semester, and these midterms are conducted by the course coordinators or the faculty members during the slot which is notified by the chairman exam. The midterm examination will not have any optional questions. The evaluation of the answer sheets for the midterm and the end term examination of Btech students are done by the concerned faculty members. Marks are awarded to the students for each of the CO in the proper format, and compiled marks are submitted by individual faculty to the course coordinator in the given format. So our question papers would basically be on the basis of the COs. Now this is another term which you must be familiar with, as and when you will be getting acquainted with the course contents, you would be knowing all these terms. What is the CO, what is PO, what are program educational objectives, and so on. Now, when we conduct the external examination, these are the things which we focus on. Each course coordinator prepares and types the question paper for the end term examination, which is given to you. In case of the course is taught by many faculty members, then the paper is set up by the course coordinator, who is assigned by the head of the department. The typed question paper is submitted to the head of the department, who then arranges to be distributed amongst the students. The end term examination is conducted through the examination cell of the university department, and any discrepancies in the question paper is reported to the chairman or the BS, which is the who is the head of the department. The course coordinator is responsible for setting the question paper and maintaining its secrecy. The course coordinator has to ensure the coverage of all the contents in the question paper. The end semester examination question paper shall cover all the sections of the course. Now we are also very focused on providing the industry internship and summer training to the students. So the students, they have a 2 hour per week per batch assigned for the evaluation of the practical training, which they perform after the 6th semester, and then they are evaluated for this in the 7th semester. So this is an integral part of our course curriculum, where we would like the students to interact with the industry, perform the industry internships or the summer training. We have 21 faculty members. Out of these 21 faculty members, we have 4 professors, 5 associate professors, and 5 assistant professors, and 7 NPIU faculty members are there in our department. So we are total 21 faculty members in our electrical engineering department. There are 9 labs in the electrical engineering department. The first year students, they would be interacting with the electrical engineering department by coming to this particular lab, which is at number 9. It is electrical engineering shed lab. The first year students would be coming to this particular lab and performing their experiments of the electrical engineering lab. Now this is means an introduction to the closing and the opening ranks which the students of our departments had in the you can say in the entrance. So on the scale of 0 to 100, you can see to it that fairly good means students with good academic record are coming to our department. So this is all about our department. I would like to share with you a small video. This video has been prepared by one of the third year students. So I would like to show this video to you. Established in 1981, the institute is known for its prestigious technical education and study infrastructure. It has 384 acres, lush green campus, and student-friendly environment. Department of Electrical Engineering, established in 1981, is one of the oldest departments of institute and region. Department of Electrical Engineering is granted provisional accreditation in 2019 by National Student Accreditation Master's MBA for 3 years. Classrooms of department are well spacious and fully furnished. You have flexible college, rest house, meeting rooms, high electrical installation. The study is also complete private guidance of high level skills. Now let's have a look to our lab.
Labs of our departments are well equipped with various quality equipment, including power system lab, power electronics lab, PC lab, service lab, power system lab, electrical measurement lab, electrical machine lab, in-block electronics lab, microprocessor lab, and many more. Now, let's have a look through the events held across the years. So thank you, sir. That's all about our department. Over to you again. Thank you, Kapoor sir. Thank you, Kapoor sir. I am very grateful to you for giving a glimpse of the campus also from the campus gate. The students had a feel of electrical circuits, particularly photograph, which gives them glimpse that they have to work on the circuits as well as labs to become engineers. Thank you, Kapoor sir, for a wonderful presentation and good learning by everybody. I am very much privileged to welcome Praveen Bhandari sir in this session. माथुर साहब, आप अगर हैं तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे सर भंडारी सर को? भंडारी साहब को क्या इंट्रोड्यूस करें सर? सर बच्चे तो नहीं जानते ना सर। बच्चे नहीं जानते, बड़े सब जानते हैं। भंडारी साहब नमस्कार। नमस्कार माथुर साहब, नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपका हंसता हुआ चेहरा देखने को मिला सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही होगी आपको शायद? बिल्कुल, आपकी आवाज हमेशा ही सुनाई देती है सर, कभी रुकी थोड़ी आपकी आवाज। तो हम सब स्वागत करते हैं हमारे साथी प्रवीण भंडारी जी का। प्रवीण भंडारी जी का इंट्रोडक्शन दे दूं आपको हल्का सा। प्रवीण भंडारी जी एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और लकीली मैं भी उसी कॉलेज से पास आउट हूँ, एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो हमारे कॉलेज के साथी हैं। दूसरा बीटेक और अपनी ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने सबसे पहले यहाँ ज्वाइन किया था इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में। तो इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में हम इनके साथ रहे। फिर जैसे जैसे हमारा कॉलेज आगे बढ़ता रहा, इन्होंने कॉलेज में कई टीचिंग के अलावा कई अन्य पोस्टों पे भी अपनी सर्विसेज दी, और टीचिंग के एकेडमिक्स के अलावा ये समाज सेवा और दूसरे अन्य कार्यों में भी पूरे कोटा में बहुत जाना माना नाम है। उसमें काफी एक्टिविटी करते रहते हैं, और उसी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए कुछ साल पहले इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा या राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से वीआरएस ले ली है, और अभी अपने आप को पूरी तरह से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं एक बार वापस, और मैं उम्मीद करता हूं कि छात्र जो है इनकी सेवाओं का या इनकी एक्सपर्टीज का जरूर लाभ उठाएंगे। और ऐसा नहीं है कि प्रवीण जी सिर्फ आज ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहते हैं, और जब जब फिर मौका मिलेगा हम छात्रों से जरूर इनका इंटरेक्शन करवाएंगे। स्वागत है प्रवीण जी आपका। थैंक यू वेरी मच। सर मैं एक लाइटर नोट पे बताएं प्रवीण जी, आप बताएं। मैं एक लाइटर नोट पे सब छात्रों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे संस्थान में एक वार्षिकोत्सव होता है अनुकृति करके। वो कल्चरल इवनिंग होता है, बहुत 2 दिन का 3 दिन का इवेंट होता है, बहुत एक्स्ट्रावेंजा होता है। भंडारी साहब उसमें परमानेंट जज रहते हैं, मिस्टर अनुकृति और मिस अनुकृति के सिलेक्शन में। ही इज एन आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी
जिनका एकेडमिक, इंडस्ट्री, समाज सेवा, टीचिंग सब में इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है कि ही हैज बीन द परमानेंट जज ऑफ मिस्टर अनुकृति एंड मिस अनुकृति इवेंट इन आवर वार्षिकोत्सव। हाँ सर बताइए। प्रवीण जी, मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा बीच में। बिल्कुल सर। और एक एम्प्लॉय है शैलेंद्र, जिनकी आज उनकी डेथ हो गई। तो अभी उनका, हाँ आप शायद जानते होंगे, हमारे 4th क्लास एम्प्लॉय हैं शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी उनकी कंडोलेंस रखी है सर, तो मेरे को उधर निकलना पड़ेगा, तो मैं आपसे एक्सक्यूज चाहता हूँ कि मैं इस इंडक्शन मीटिंग से बाहर निकल रहा हूँ। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और 3:30 बजे आपसे मिलेंगे वापस। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रवीण जी, may I start now? हाँ भंडारी साहब प्लीज। I hope I'm visible and I'm audible as well. Yes sir, yes sir, yes sir. Sir, first of all, thank you very much for inviting me here. It's my privilege. I worked here for 25 years and I have some very, very fond memories. I worked in close association with Anil Mathur ji, Praveen Agrawal ji, Ranjan ji, and all my peers, and I still cherish those moments. So it's time for me to relive those memories and address our students. I welcome the new students, new entrants to this college. And because I know the history of this college, I can say very confidently that in this audience that I'm addressing today, I can see 25 years from now, and I can see some CEOs, some chief engineers, some very successful entrepreneurs, very successful people in life. मेरे पास एक टाइम मशीन हो जो अगर 2045 में सेट कर दी जाए तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग सीईओ होंगे, कुछ एंटरप्रेन्योर्स होंगे और बहुत सक्सेसफुल होंगे। लेकिन साथ ही मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग होंगे जो इतने कामयाब नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे जो काफी साधारण होंगे। ये कह सकता हूं कुछ अर्श पर तो कुछ फर्श पर। आज जब सब एक साथ बैठे हैं, when all are equals, then why is that after 25 years someone becomes very successful and someone is not that? क्या कारण है? Let's analyze our life जर्नी जो है हमारी, उसको हम थोड़ा सा एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। I begin with purpose of life. I would like to share the slideshow. Please wait for a while. So welcome again. So we are talking of 25 years from now. आज हम यहाँ पर हैं, सभी बराबर हैं, सब साथ हैं, लेकिन बाद में क्या होना है किसी को पता नहीं. So how is going to be our journey and how we can really manipulate it, या जिसको हम और एक कामयाबी की तरफ ले जा सके, उसके बारे में कुछ बात. सबसे पहली बात तो हम ये है कि हम इस जर्नी में एक पर्पस ढूंढते हैं. लाइफ की जर्नी का शुरुआत तय है और अंत तय है. इसके बीच में आपको कुछ मोमेंट्स, कुछ साल मिले हैं और ये एक जर्नी है. इससे ज्यादा इसको कुछ और नहीं कहें तो ज्यादा बेहतर होगा. मैं पूछना चाहूंगा, आपके ग्रैंडफादर रहे हैं, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर रहे हैं, आपके और भी एंसेस्टर्स रहे हैं, उन्होंने भी जीवन जिया है. क्या उनकी लाइफ का कोई पर्पस था? शायद हम कोई बहुत एब्स्ट्रैक्ट आंसर जरूर दे सकते हैं, लेकिन हम कोई एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आंसर इसका नहीं दे सकते कि लाइफ का ये पर्पस था. इनफैक्ट लाइफ को अगर एक जर्नी माना जाए और इस जर्नी को एंजॉय करना है, यही इसका पर्पस माना जाए, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा. वात्स्यायन ने कहा था कि रास्ता जो होता है वो मंजिल से बहुत खूबसूरत होता है. तो ये जर्नी और इसको जर्नी को जीने का आनंद, वही अपने आप में लाइफ का पर्पस है. एक बौद्ध भिक्षु की कहानी आती है जिसमें एक विजिटर उनके पास जाता है और उनके हट में बैठ के देखता है और पूछता है कि वेयर इज योर लगेज. बौद्ध भिक्षु से पूछा जाता है वेयर इज योर लगेज. तो भिक्षु पूछता है ट्रैवलर से कि वेयर इज योर लगेज. तो उसने कहा बट आई एम अ ट्रैवलर सो आई डोंट हैव लगेज. तो भिक्षु कहते हैं कि सो एम आई. तो इस बात को रियलाइज कर लें कि हम एक जर्नी पे हैं केवल, और इस जर्नी को जितना आनंद उठा पाएंगे वही हमारे जीवन की सार्थकता होगी. इसको एक अलग तरह से प्रेजेंट करें एंगल से, लाइफ में कोई डीपर मीनिंग ढूंढने के बजाय
मैं एक चीज कहूं कि हमने एक मूवी देखी 2 घंटे की, मूवी के पहले उस मूवी का कोई वजूद नहीं, वो 2 घंटे उतार चढ़ाव का आनंद, और उस 2 घंटे के बाद उस मूवी का कोई मतलब नहीं। हमने एक अच्छा मैच देखा, वनडे क्रिकेट मैच, शुरुआत के पहले उस मैच का कोई वजूद नहीं, 7-8 घंटे 5 घंटे का वो उतार चढ़ाव आनंद, और उसके बाद उस मैच का कोई वजूद नहीं सिवाय रिकॉर्ड बुक्स में कुछ नाम लिखे जाएंगे। हमारी लाइफ भी ऐसी है, इट्स नथिंग बट अ मूवी, अ मैच with ups and downs, and it is up to you to enjoy it, to live it successfully. हम अगर इसको एक मैच मान लें, अगर लाइफ को एक गेम मान लें, तो शायद हमारे लिए आगे एनालाइज करना काफी इजी हो जाता है। सो लेट्स थिंक दैट इट्स अ गेम, इट्स अ गेम ऑफ एनी गेम यू कैन ऑप्ट फॉर, बट आई एम टेकिंग, से फॉर एग्जांपल, माय लाइफ इज अ गेम ऑफ फुटबॉल। यकीन मानिए हर साल 20 करोड़ लोग इस प्लेनेट पे आते हैं अपनी लाइफ जीने के लिए, और शायद इतने ही लोग बिना किसी मकसद के वापस चले जाते हैं। सो रादर देन लुकिंग फॉर अ डीपर मीनिंग, आई थिंक लेट्स प्ले दिस गेम। अगर ये गेम है तो तय बात है कि इसके कुछ रूल्स होंगे, बिकॉज विदाउट रूल्स यू कैन नॉट प्ले अ गेम, विदाउट रूल्स देयर कैन नॉट बी एन ऑर्डर। तो तय बात है लाइफ में, गेम में रूल्स जरूरी हैं। हम फुटबॉल खेलने उतरते हैं मैदान पर, अगर आपको मैं कहता हूं जाइए मैदान पर फुटबॉल खेलिए, आपका पहला सवाल क्या होगा? मैदान पर जाकर के आप इधर उधर देखेंगे और सबसे पहले कहेंगे मेरा गोल पोस्ट कहां है? सो वेयर इज द गोल? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफ इज अ गेम, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, बट वेयर इज माई गोल पोस्ट? सेम हियर, लाइफ में भी गोल को आइडेंटिफाई करना, गोल पोस्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत गोल पोस्ट चुन लिया तो शायद आप अपना नुकसान करने वाले हैं, अगर आपने गोल नहीं चुना तो भी आप अपना नुकसान करने वाले हैं। सो जुडिशियसली सिलेक्ट योर गोल पोस्ट। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका गोल पोस्ट कहां पर है। इसके बाद आप मैदान पर उतर के देखेंगे कि मेरे जैसी जर्सी किन लोगों ने पहनी हुई है, मेरी टीम में कौन कौन है, हु इज प्लेइंग अलॉन्ग विद मी, मेरे को कौन सपोर्ट करने वाला है, मुझे कौन आगे ले जाने वाला है। फुटबॉल में शायद पहचानना बहुत आसान है कि जर्सी देख करके आप पहचान लेते हैं कि आपके साथ कौन है और आपके अगेंस्ट में कौन है। लाइफ शायद इतनी सिंपल नहीं, यहां पर आपको एक विजन रखनी पड़ेगी, एक बारीक तरीके से ये एनालाइज करना होगा, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी टीम में कौन कौन मेंबर्स हैं, हु आर योर सपोर्टर्स, जिनके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। यह भी जानना जरूरी है कि आपके ओपोनेंट्स कौन कौन है, क्योंकि जब तक आप ओपोनेंट्स को नहीं पहचान पाते आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। मैं यहां जरूर इतना कह दूं कि ये ओपोनेंट्स हैं, ये एनिमीज नहीं है। लाइफ में हम अक्सर जो हमारे ऑपोजिशन होता है उसको एनिमी का स्टेटस दे देते हैं और वहां हम गलती कर बैठते हैं। हमारे ओपोनेंट्स हैं, हमारे एनिमीज नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। वो उनका काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में मेरी फाइल किसी नियम से रुकती है, वो ऑपोजिशन है, लेकिन वो एक नियम के तहत। इफ ओपोनेंट इज प्लेइंग टू हिज द रूल्स ऑफ द गेम, देयर इज नथिंग रॉन्ग इट। समटाइम्स दे मे गो बियॉन्ड द रूल्स ऑफ द गेम, स्टिल प्लीज डू नॉट हैव दिस फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी। इनफैक्ट सही बताऊं तो गेम का मजा तभी आता है जब ओपोनेंट स्ट्रांग होता है। आप इंडिया केनिया मैच देखना पसंद करेंगे या इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच देखना पसंद करेंगे, चॉइस आपकी है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच आपको ज्यादा थ्रिल देगा, आपको ज्यादा फन देगा, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, बजाय कि इंडिया केनिया की टीम से खेले। लाइफ में कोच होते हैं, फुटबॉल में भी कोच होते हैं। फुटबॉल में भी कोच है, लाइफ में भी कोच हैं, आपके टीचर्स, आपके गुरु। आपको कई कोचेस अभी तक मिल चुके होंगे, आगे भी मिलने वाले हैं। उनकी बात सुने, उनकी बात को ग्रहण करें और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ें। और अल्टीमेटली हर गेम का, चाहे फुटबॉल का हो चाहे वो लाइफ का हो, रेफरी एक ही होता है, द ऑलमाइटी। उस रेफरी के रूल्स जो हैं वो बहुत जुडिशियस है, उससे गलती नहीं होती है। उसको किसी थर्ड विजन की जरूरत नहीं है, उसको किसी थर्ड एम्पायर की जरूरत नहीं है। उसके कॉल्स परफेक्ट होते हैं। आप उसको समझ पाए ना समझ पाए वो अलग बात है। इसलिए उस रेफरी पर यकीन करें और गेम को फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से खेलने की शुरुआत करें। तो ये बात हमने की कि लाइफ जो है वो एक फुटबॉल की तरह का गेम है, लेकिन यहां थोड़ा सा मैं यहां हाईलाइट कर दूं कि जैसे मैंने कहा गोल होता है,
टीम होती है, अपोनेंट्स होते हैं, या थोड़ा सा अंतर हो सकता है। पहली बात तो गोल जो होते हैं, आपके जो गोल्स होंगे वो नॉर्मली दो तरह के होंगे। एक वो गोल्स होंगे जो सोसाइटी आपको देगी। इनफैक्ट हमारे ज्यादातर गोल्स वही होते हैं जो सोसाइटी हम पर थोप देती है। आपको पढ़ाई करनी है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको जॉब करना है, आपको मैरिज करनी है, आपको सेटल होना है, मकान बनाना है। ये सारे गोल्स सोसाइटल गोल्स हैं। ये सोसाइटी ने आपके अंदर इतने तरीके से एम्बेड कर दी कि आप उनको अपना गोल मानने लग गए हैं। मानिए, कोई गलत नहीं, लेकिन अपने भी कुछ गोल्स रखिए, पर्सनल गोल्स, चाहे छोटे चाहे बड़े। जो पर्सनल गोल्स होंगे वो बताएंगे कि आपकी डेफिनेशन क्या है, आप क्या चाहते हैं जीवन से, और आप क्या हासिल करना चाहते हैं, और क्या आपको आनंद देता है। एक चीज और, फुटबॉल के गेम में गोल पोस्ट, टीम और ओपोनेंट्स कांस्टेंट होते हैं, लेकिन लाइफ का गेम जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। यहां गोल पोस्ट भी शिफ्ट होता रहता है, टीम मेंबर्स भी चेंज होते रहेंगे, और ओपोनेंट्स भी लगातार बदलते रहेंगे। दैट मेक्स द गेम ऑफ लाइफ मोर डायनेमिक एंड मोर चैलेंजिंग। Okay, so if we want to play this difficult game, we must have certain strategies. हमारे पास में कुछ तो स्ट्रेटेजीज होनी पड़ेंगी जिससे मैं ये गेम को खेल सकूं। इन स्ट्रेटेजीज की हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, पर उसके पहले कुछ वर्ड ऑफ कॉशन। डू नॉट सेलिब्रेट आफ्टर हिटिंग अ गोल। फुटबॉल के गेम में अगर आपने एक गोल हिट किया और फिर 5 मिनट आप उसको सेलिब्रेट करते रहे, तो शायद अपोनेंट आकर के दूसरा गोल आपके ऊपर कर जाएगा। ये सेलिब्रेशन का पार्ट जो है बड़ा सटल होना चाहिए, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यू आर नॉट स्टॉपिंग, इट्स अ जर्नी एंड यू डोंट नीड टू स्टॉप एनीवेयर। इनफैक्ट आई वाज लकी इनफ टू विजिट एप्पल हेडक्वार्टर्स इन यूएस, और वहां पे स्टीव जॉब्स का एक कोट लिखा हुआ है, काफी अच्छा। आई एम सॉरी, it says, if you have successfully accomplished a task, move on to the next challenge. I repeat it. Steve Jobs says, if you have successfully accomplished a task, move on to the next challenge, because it's not the time for sitting. It's not for time for celebrating. Celebrations are essential. There's no doubt about it, but it should not hinder the further growth. It should not come in way of moving ahead. Accept failures. गेम में कुछ गलत भी होगा, ओपोनेंट गोल दाग जाएगा। क्या फुटबॉल में एक गोल अगर हो जाता है तो हम हाथ धर के बैठ जाते हैं, आगे अब कुछ नहीं करना है, हो गया गोल, सामने वाले ने गोल कर दिया? नहीं। विद द डबल zeal, with the double energy, we counter attack. Same is the case of life. If you are playing the game of life, you need to multiply your zeal, multiply your energy, and then conquer the failures. So failures आती हैं, these are part of life. अगर अप एंड डाउन नहीं होंगे तो लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो जाएगी, मोनोटोनस हो जाएगी। तो ये अप्स और डाउन्स दोनों में आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को बरकरार रखना है। एंड देयर इज नो लीन आवर। जीवन में कभी भी कोई ऐसा क्षण नहीं होगा, जैसे फुटबॉल में नहीं होता, ठीक उसी तरीके से जीवन में भी कोई ऐसा क्षण नहीं आएगा आपके जब आप कहें कि यस आई एम एट स्टैंड स्टिल, लीन पीरियड है, ना मुझे कुछ करना है, मुझे बस केवल टाइम को किल करना है। ये पर्टिकुलरली मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नॉर्मली एक कंसेप्ट होता है कि जब आप कॉलेज में आते हैं कि नहीं बस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, फिर लाइफ बड़ी कोजी है, फिर बड़ी इजी है। दिस इज अ मिथ। ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप इनफैक्ट जितना आप पढ़ के आए हैं, आपको उसका डबल या ट्रिपल इनपुट अभी आपको कॉलेज में देना होगा, और जितनी मेहनत आप कॉलेज में करने वाले हैं शायद इसका 2 गुना या 3 गुना आगे लाइफ में और हार्ड वर्क करना होगा। सो देयर इज नो लीन आवर्स इन द लाइफ। फ्रॉम द डे वन यू शुड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल। So what should be the strategies of life? हमारे ये जो गेम है, इस गेम में हम बेहतर से बेहतर खेल पाएं, इसके लिए मेरी स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? Let's take them one by one. The first is, and the most important is, know yourself. आप अपने आप को पहचानने के तरीके कई होंगे, जिससे आप अपनी काबिलियत, आप अपनी सीमाएं, आपकी जिसको हम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कहते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकें। टेक्निकली हम इसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, लेकिन मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। पर हाँ, खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, एक्सपेक्टेशंस को और लिमिटेशंस को नहीं पहचान पाते हैं, तब तक आप अपने गेम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप क्या हैं और आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों चीजें आपको जानना जरूरी है।
इसके बिना गेम खेलने से कोई फायदा नहीं। हो सकता है आप फुल बैक खेल सकते हैं फुटबॉल में, हो सकता है आप अटैक कर सकते हैं, हो सकता है आप डिफेंड अच्छा करें। ठीक उसी तरीके से लाइफ में भी आपका क्या रोल होगा, आप कौन सा रोल बेहतर प्ले कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इमेजिन कीजिए कि अगर सचिन तेंदुलकर को बास्केटबॉल खिलाया गया होता या विराट कोहली को वेट लिफ्टिंग कराई गई होती तो उनका क्या हश्र होता। इट्स जस्ट बिकॉज दे कुड आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड कैपिटलाइज ऑन दैट, उसको उसका फायदा उठा पाए, इसलिए वो ग्रेट प्लेयर्स बन पाए। अगर वो अपने आप को नहीं पहचान पाते तो शायद जैसे करोड़ों लोग सड़कों पर हैं उनमें से एक वो भी होते। एक यहां पे नो सेल्फ में एक बात मैं और करूंगा। नो सेल्फ का मतलब कभी कभी ऐसा ले लिया जाता है कि आप क्या चाहते हैं, केवल आप क्या चाहते हैं इससे बात पूरी नहीं होती। आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, और आपका पृष्ठभूमि, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, ये सब कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसने एक मैसेज दिया था दिल की सुनो, और उस बात को काफी सीरियसली भी लिया गया कि हमको दिल की सुननी चाहिए। ये मैसेज बहुत पार्शियल है, मैं शायद से 1% इत्तेफाक रखता हूं, उससे ज्यादा नहीं। अगर हम केवल दिल की सुन करके अपना कैरियर बनाएंगे तो कोई ऐसा होगा जो कहेगा मेरे दिल में यह है कि मैं सड़क पर झाड़ू लगाऊं, कोई ऐसा होगा मेरा दिल करता है कि मैं झूठे बर्तन साफ करूं, कोई ऐसा होगा जो कहेगा मैं मैस में खाना बनाऊं। तो फिर ये रोल्स कौन प्ले करने वाला है? केवल दिल की सुनने से काम नहीं चलेगा। आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, और आपकी बैकग्राउंड क्या है, ये काफी हद तक डिपेंड करता है। इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में अगर आप घूम करके देखेंगे तो शायद 1% लोगों के पास वो लग्जरी होती है कि वो दिल की सुन सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है। सो ओनली 1% ऑफ द पीपल कैन लिसन टू देयर हार्ट। वो चॉइसेस अपने दिल से बना सकते हैं, ये चिंता किए बगैर कि आउटकम क्या होगा। 10% लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो दिमाग की सुनते हैं। उनको पता होता है कि हमें किस बात पे जाना है, हमें क्या चाहिए, जुडिशियसली XYZ उनकी ड्रीम लिस्ट, उनकी विश लिस्ट तैयार होती है। वो विश लिस्ट कैसे अचीव करनी है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप, वो उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। और उसको समझ करके 10% लोग ऐसे हैं जो दिमाग से अपना फैसला करते हैं। और बड़े अफसोस की बात है, जहां 1% लोग दिल की सुनते हैं, 10% लोग दिमाग की सुनते हैं, हमारे समाज में आज भी 90% लोग ऐसे हैं जो केवल पेट की सुनते हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो केवल पेट की सुनते हैं। उनके लिए जीवन का लक्ष्य केवल यही है, सुबह का खाना और शाम का खाना। ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए शर्म की बात है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोगों को चॉइस करने का राइट तक नहीं है, बिकॉज उनकी सीमाएं अकल्पनीय हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते इससे। बस मैं इतना कहूंगा कि आप उन चुनिंदा किस्मत वाले प्रिविलेज्ड 10% लोगों में से हैं, उसका फायदा उठाएं, अपने गेम को अच्छे से खेलें और कामयाब बने। सपने जरूर देखिए, लेकिन मैं ये कहूंगा सपने हमेशा परिस्थितियों के दास होते हैं। द ड्रीम्स आर सबसर्विएंट टू द रियलिटीज। कोई साइकिल पे चलने वाला मर्सिडीज का सपना ही नहीं देखता, साइकिल पे चलने वाला सपना देखता है मोटरसाइकिल का, मोटरसाइकिल वाला देखता है कार का। बेघर लोग सपना देखते हैं झोंपड़ी का, झोंपड़ी वाला देखता है 2 घर के मकान का, और 2 घर के मकान वाला देखता है बंगले का। तो आपके सपने परिस्थितिजनक होते हैं। सपने जरूर देखिए, पर वो रियलिस्टिक हो, और उनको आप हासिल करने के लिए जो भी इनपुट्स चाहिए वो आपके पास में। चलिए, जब आप इस गेम को खेल ही रहे हैं और आपने अपने आप को पहचान लिया, आपने अपना आकलन कर लिया और अपना गोल कुछ हद तक डिसाइड किया, तो अगला स्टेप है इवॉल्व। ये जो इवॉल्व वाला स्टेप है, ये अभी जिस लाइफ के जिस स्टेज में आप हैं वहां बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल क्वालिटी पर्सन, एक ऐसा बंदा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बाकी और कुछ नहीं। क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे? या आप ऐसा बनना चाहेंगे कि शायद क्रिकेट भी आता हो, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हो आपकी? तो बात सही है। एक गिटार, उसमें केवल एक तार है, एक गिटार बनाया गया जिसमें केवल एक तार है, उससे कैसा संगीत निकलेगा? उसमें तार बढ़ाते जाइए, संगीत सुधरता जाएगा। तो यही हमारा जीवन है। जितने तार हम अपने जीवन में जोड़ पाएंगे, जितने तार हम हमारे गिटार में जोड़ते जाएंगे, उतना ही जीवन हमारा सक्सेसफुल होगा, मल्टी डायमेंशनल होगा, सुरीला होगा, सफल होगा। अ सिंगल वायर गिटार इज नॉट गोइंग टू वर्क।
people would not like it. So हमारा पूरा एफर्ट होना चाहिए। 15-20 मिनट फ्री होता हूँ, बाकी ऐसे आप इधर जी कर देना, मैं जी जी जी। तो हमारा पूरा मकसद यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन को कुछ इस तरह से इवॉल्व करें कि हमें हमारी जो लगातार, जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जो हमारे गुण हैं, उनको हम ऐड करते जाएं, ना केवल पढ़ाई वाला कीड़ा बन करके रह जाएं, ना केवल एक खिलाड़ी बन के रह जाएं, ना केवल एक। इनफैक्ट आप पाएंगे कि जो ज्यादातर कामयाब लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल हैं। आप धोनी को देख लीजिए, क्या वो केवल क्रिकेट खेल सकता है? ही इज अ वेरी गुड मैनेजर, ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ही नोज हाउ टू हैंडल मैन, ही इज वेरी इलोक्वेंट, बहुत अच्छा बोल लेता है। तो ये जब तक डायमेंशन, हम मल्टी डायमेंशनल नहीं बन पाएंगे, तब तक हमारी लाइफ की जर्नी या लाइफ का गेम जो है वो शायद इतना कामयाब नहीं हो पाए। सक्सेसफुल लोग हमेशा मल्टी डायमेंशनल पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये कहना बड़ा आसान है कि आप खेलें भी, आप पढ़ें भी, आप उसके बाद में जनरल नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, म्यूजिक भी आपको आना चाहिए। आप जब सब करेंगे तो अगला कदम आता है प्रायोरिटाइज। ये तो सही है कि आपको 10 गतिविधियों में भाग लेना है, ये तो सही है कि आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है और आपको वो भी करना है, लेकिन उनमें से चुनाव कैसे करें? क्योंकि अगर आप यहां आए हैं और आप क्रिकेट में लग गए, आप म्यूजिक में लग गए, आप कल्चरल एक्सट्रावेगेंजा में लग गए, आप डिबेट्स में लग गए और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? तो ये बात सही है कि अगर मेरी किटी के अंदर 6 तार हैं मेरे गिटार में, तो कौन सा तार कब बजाना है ये मुझे पता होना चाहिए। मेरी प्रायोरिटीज जो हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम एक कहानी के तौर पे या एक किस्से के तौर पे देते हैं, मैं शेयर करना चाहूंगा। जब आप, दिस इज ओनली मेंट फॉर स्टूडेंट्स, जब आप कॉलेज में आए हैं, आपकी पहली प्राथमिकता है आपकी पढ़ाई, योर स्टडीज। आप यहां आए हैं इंजीनियर बनने के लिए, आप यहां आए हैं एक सक्सेसफुल एकेडमिक क्वालिफिकेशन अचीव करने के लिए। ये आपकी पहली प्राथमिकता है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हैं, आप एक्सीलेंट परफॉर्मर हैं एकेडमिक्स में, तो आपका स्कोर है 1, आपका स्कोर है 1। ऑलराइट, सो इफ यू आर अ गुड एकेडमिशियन, आप अच्छे स्कोर्स ला रहे हैं, आपका स्कोर 1 होगा। अगर आप खराब स्कोर लाते हैं, बैक्स लाते हैं, फेल होते हैं, आपका स्कोर 0 होगा। अब आते हैं दूसरी गतिविधि पे। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप क्रिकेट भी खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं, तो उसका स्कोर आपका 1 0 आपको और मिलेगा। क्रिकेट में 1 नहीं मिलेगा, क्रिकेट में आपको 0 मिलेगा। अगर आप अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं, आपको 1 0 और मिलेगा। अगर आप अच्छा म्यूजिक भी प्ले करते हैं और अगर आप कोई डिबेट्स में भी बहुत अच्छे हैं, तो आपको 1 0 और मिल जाएगा। अब आपको अपना स्कोर डिसाइड करना है। आपका स्कोर क्या होगा? अगर आप अच्छे पढ़ते हैं 1, अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं उसके पीछे 0, आपकी वैल्यू 10 हो गई। अगर आप अच्छे पढ़ते हैं, क्रिकेट भी अच्छा खेलते हैं और म्यूजिक भी जानते हैं, एक और 0, 1 0 0, आपकी वैल्यू 100 हो गई। दिस इज हाउ वी कैन मैक्सिमाइज आवर वैल्यू। अगर आप केवल पढ़ने तक रह गए, तो आपकी वैल्यू केवल 1 रह जाएगी, देयर विल बी नो 0 बिहाइंड। सब्सिक्वेंट जीरोस नहीं आएंगे तो आपकी वैल्यू केवल 1 रह जाएगी। जो सोसाइटी में आपकी वैल्यू केवल 1 होगी, इसके आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। सो ट्राई टू एक्यूमुलेट जीरोस ऑल्सो, 1 0 0, इस तरह से। हाँ, एक बात ध्यान रखने की है, 1 को सबके से आगे रखना है। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई से आगे क्रिकेट को रख दिया, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई से आगे म्यूजिक को रख दिया, पढ़ाई को पीछे ले आए, तो आपका स्कोर 1 0 0 नहीं होगा, आपका स्कोर हो जाएगा 0 0 1। तो ये हमेशा ध्यान रखें। ये एक एग्जाम्पल था जिससे हम ये बताते हैं स्टूडेंट्स को कि उनको कॉलेज में आकर के अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करनी है। सबसे आगे एकेडमिक्स को रखना है और उसके साथ जो इवोल्यूशन पार्ट्स, जो हमने कहा, म्यूजिक भी सीखिए, आप डिबेट्स भी कीजिए, आप टेक्नो क्लब्स भी कीजिए, उनको पीछे ऐड करते चलें। आई होप दिस एग्जाम्पल मेक्स इट क्लियर कि आपको लाइफ को कैसे प्रायोरिटीज में लेना है। अब हमने ये बात कर ली कि आपको कई गतिविधियां करनी हैं, अब ये भी बात कर ली कि आपको प्रायोरिटाइज भी करना है ऐसे करके। लेकिन दिन में घंटे तो 24 हैं और साल में 365 दिन हैं। हम कैसे बैलेंस करें, कब हमको मजे करने हैं? क्योंकि लाइफ केवल स्लॉगिंग का नाम तो नहीं है, लाइफ केवल काम करते रहना, पढ़ते रहना, म्यूजिक सीखना, इसका नाम तो नहीं है। जीवन में तो सभी चीजें होनी चाहिए। जब हम कह रहे हैं एक जर्नी है, तो जर्नी में स्पीड भी होगी, रोड साइड पे रुकेंगे भी, आनंद भी लेंगे,
सारी जो जो पास में सड़क के किनारे सीन्स हैं उनका भी आनंद लेना है, तो मैं सड़क पे ध्यान दूं या साइड वाले सीन्स देखूं या कहीं रुक करके कुछ खाने का आनंद लूं, मैं करूं कैसे, लाइफ को कैसे बैलेंस करूं? क्योंकि हाँ, मेरा मन तो करता है आनंद उठाऊं, लेकिन साथ ही साथ जो बताया गया उससे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो काम करते रहना है, तो इसको कैसे बैलेंस करें? तो यहां पर भी एक एग्जाम्पल है वनडे क्रिकेट मैच का। आप सब क्रिकेट से रूबरू होंगे ऐसा मेरा मानना है, और जब आप वनडे क्रिकेट मैच खेलते हैं तो वनडे क्रिकेट मैच में हमारा लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा रन्स बोर्ड पर लगाना। गेम शुरू होता है, आपके पास में जब गेम शुरुआत होती है तो आपके पास में 10 विकेट्स होते हैं। ठीक इसी तरह लाइफ का भी जब गेम शुरू होता है तो आपके पास में 10 विकेट्स होते हैं। आपकी हेल्थ, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके मदर फादर रिलेशंस, आपकी वेल्थ, आपकी सोशल रेपुटेशन, इस तरह से 10 विकेट आपको दिए जाते हैं और आपको इनको बचाना है। इमेजिन द वन डे गेम इज लाइक, लाइफ इज लाइक अ वन डे गेम। तो हमारे को 10 विकेट्स दिए गए, जैसे वन डे गेम में 10 विकेट्स होते हैं, 10 प्लेयर्स को आउट करना होता है, ठीक इसी तरह आपको 10 दिए गए। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशंस, आपकी सोशल रेप्यूट, आपकी प्रॉपर्टीज, एसेट्स वगैरह वगैरह, और आपको उनको डिफेंड करना है, आपको उनको बचा के चलना है, क्योंकि आप उनको खोना नहीं चाहते। और वनडे मैच में जो चौके लगते हैं, जो छक्के लगते हैं, जो रन आते हैं, वो जीवन का आनंद है। तो हम लाइफ में जब भी खुल के एंजॉय करें, कुछ अच्छा मोमेंट आए, तो वो चौका लगा, वो छक्का लगा या रन बना, है ना, तो रन इज फन। जो रन बनाने में जो आनंद है वो आनंद है, वो भी जीवन का आनंद है। तो ये हमारा एक वनडे मैच की तरह लाइफ है, जिसमें मुझे विकेट्स भी बचाने हैं और आनंद भी लेना है, रन भी बनाने हैं। अब जरा आप ही बताइए वनडे मैच कैसे खेला जाए? क्या वनडे मैच मैं ऐसे खेलूं कि केवल विकेट बचाता रहूं, क्योंकि उनको कोई नुकसान ना हो जाए और मेरे रन पे ज्यादा ध्यान नहीं दूं? शायद बहुत बोरिंग हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक कंजर्वेटिव अप्रोच ये हो सकती है कि मैं तो जीवन भर विकेट बचाने में लगा रहा और मैंने कोई रन ही नहीं बनाए। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है, विकेट की चिंता मत करो, आगे आओ, पिच पर उठा उठा करके मारो, चाहे विकेट जाए आउट हो जाए उसकी चिंता ना करो, खूब आनंद लो, खूब मजे करो। शायद ये भी अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके 10 विकेट चले जाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो वनडे मैच कैसे खेला जाता है? वनडे मैच के अंदर हम ये देखते हैं कि कब अपॉर्चुनिटी है। जब अपॉर्चुनिटी होती है तो हिट करते हैं, और जब चैलेंज आता है तो डिफेंड करते हैं। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कब आप चैलेंज मोड में हैं और कब आप अटैक मोड में हैं। वनडे मैच में जैसे अगर अच्छी डिलीवरी आ जाती है, चैलेंज तगड़ा है, तो केवल डिफेंड करते हैं, रन बनाने की नहीं सोचते। आपके फेज लाइफ का अगर ऐसा फेज है, आपके एग्जाम्स पास में है, आपको तय बात है, ये तय कर लेना कि अब डिलीवरी आने वाली है, मैं डिफेंड करूंगा केवल, मैं फन पार्ट पे अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन समर ब्रेक्स हैं, लीन बॉल है, उठा के छक्का मारूंगा, पूरा आनंद लूंगा। इनफैक्ट सही बताऊं, जो हार्डवर्क ज्यादा कर पाते हैं वही लीन पीरियड में जीवन का आनंद भी ज्यादा ले पाते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग जो हम वनडे मैच में करते हैं, शायद इसी तर्ज पे हम बैलेंसिंग लाइफ में भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज वेयर यू हैव टू डिफेंड एंड वेयर यू हैव टू प्ले अ बॉल फॉर रन्स। उसका आनंद कब उठाना है। लाइफ का एक पार्ट और इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेसिंग। ये पेसिंग भी मैं नॉर्मली स्टूडेंट से अक्सर बात करता हूं। आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपकी जर्नी, आपकी यात्रा या आपका जो लक्ष्य है वो कितने ड्यूरेशन का है, और उसके हिसाब से आपको इसकी स्पीड बनानी होगी। अगर आपके पास आज मेल आता है कि 2 दिन बाद आपके पास में कोई एग्जाम है और आपको उसमें अपियर होना है एंड दैट विल मेक योर कैरियर, शायद आप सोएंगे भी नहीं, पूरी जान फूंक देंगे। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा आता है कि ये एग्जाम 1 साल बाद है, क्या आज से ही आप इतनी मेहनत करना शुरू कर देंगे? नहीं, आप ग्रेजुअली पिकअप करेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाए, और टुवर्ड्स द एंड आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। ये पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेसिंग के लिए सबसे जरूरी है आप ये आइडेंटिफाई करें कि आप 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं या मैराथन की रेस दौड़ रहे हैं। अगर 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं जो 10 सेकंड में खत्म होनी है, पूरी जान झोंकनी है। लेकिन अगर मैराथन दौड़ रहे हैं तो एनर्जी को कंजर्व करना तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप कैसे धीमे 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 अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये अक्सर देखा गया है
कि स्टूडेंट्स जब सेशन शुरू होता है तो एक अलग जोन में जाकर कि इस बार तो हम ऐसा कर दिखाएंगे, वैसा कर दिखाएंगे, पूरी जान डाल देते हैं, लेकिन 15-20 दिन में उनकी सारी एयर निकल जाती है, सब कुछ, सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, जिसको हम बर्नआउट बोलते हैं क्रिकेट में, हम स्पोर्ट्स में, तो वो बर्नआउट हो जाते हैं और उनकी टाइमिंग गलत हो पड़ती है। तो पेसिंग जो है वो आपको बर्नआउट होने से रोकेगी और आपकी टाइमिंग भी सही एस्टैब्लिश करेगी। सो लाइफ में कब करना है, क्या करना है से ज्यादा ये भी जरूरी है कब करना है। आप अगर जो मैंने बोला है इसको जोड़ेंगे तो बहुत सीक्वेंस नजर आएगी। इवॉल्व में मैंने कहा कई गतिविधियां करें, प्रायोरिटाइज में मैंने कहा उन गतिविधियों को प्रायोरिटाइज करें 100 लॉ से। फिर मैंने कहा कि उस प्रायोरिटीज के तहत चलते हुए कैसे करना है, सबको साथ कैसे लेके चलना है, तो बैलेंस करें। और पेसिंग में क्या करना है जरूरी नहीं, कब करना है जरूरी। यू हैव टू टेक चांसेस। कोई भी गेम अगर केवल डिफेंड मोड में खेला जाए जीवन का मजा ही नहीं आएगा। अगर मैं केवल टुक टुक करता रहूं या फुटबॉल में केवल बॉल ड्रिबल करता रहूं, बस ओपोनेंट के हाथ में नहीं आए, मुझे गोल नहीं करना पर बॉल मैं ओपोनेंट को नहीं दूंगा, ऐसे खेलता रहूं, तो शायद लाइफ का मजा नहीं आएगा। यू हैव टू टेक चांसेस। लाइफ में कामयाब होने के लिए आपको चांसेस लेने ही पड़ेंगे। अगर आपने लाइफ में कुछ बड़े चांसेस नहीं लिए तो शायद आपका जीवन निरर्थक है। ये शब्द थोड़े कठोर हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है इफ यू डोंट टेक चांसेस। और इनफैक्ट ये सब कुछ कहने के बावजूद इस दुनिया में 90% लोग ऐसे होते हैं जो कोई चांसेस नहीं लेते। 90% लोग ऐसे होते हैं जो जॉब ज्वाइन करते हैं, सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक वो जॉब करते हैं और उसी जॉब में रिटायर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो चांसेस उस जॉब के अंदर रहते हुए भी ले सकते हैं। दे कैन एक्सेप्ट डिफरेंट चैलेंजेस, दे कैन एक्सेप्ट डिफरेंट पोजीशंस, दे कैन एक्सेप्ट डिफरेंट डायमेंशंस, मतलब अलग अलग रोल्स प्ले कर सकते हैं, वो भी चांस लेना हुआ है ना। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो हमेशा एक सीमित दायरे में रहते हैं, मैं जहां हूं जैसा हूं खुश हूं, बस के आगे कुछ। बहुत सफल जीवन वो होगा जब हम इन चारों चरणों में अपने आप को एक्सपेंड करते जाएं। मैं से परिवार, परिवार से समाज, समाज से प्रकृति, ये 4 चरण अगर हम पूरे कर पाएंगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ की जर्नी पूरी हो पाएगी। एक छोटा सा बिंदु और है यहां पर कि हमारी सोशल रिलेवेंस होनी चाहिए। मैंने अभी अभी कहा सोशल रिलेवेंस बहुत इजीली नहीं आती है, उसमें कई चीजें शामिल होती हैं और इसके लिए व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता। उसकी अपॉर्चुनिटीज, गॉड सेंड अपॉर्चुनिटीज, पृष्ठभूमि, कई चीजें मायने रखती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत सामाजिक सरोकार रख सकते हैं। सामाजिक सरोकार से मतलब ये है कि हम अपने से आगे दूसरों की सोचें, हमारे पास क्या है इससे आगे बढ़ते हुए। सवाल यहां पर यह उठता है, एक एग्जांपल दूंगा केवल। यहां पर हमारे एनजीओ में एक महिला आई और उसने कुछ इकट्ठे करके तुड़े मुड़े कुछ 900 रुपए निकाले और कहा कि साहब मैं करीब 3 साल पहले यहां आई थी और मेरी इच्छा बच्चों के लिए यहां पंखा लगवाने की थी। एक बालगृह है, उसके लिए बच्चों के लिए पंखा लगवाने की थी। वो बच्चों के लिए पंखा लगवाने के लिए मैं जब आई थी तब मुझे कहा था 900 रुपए का पंखा आता है। तो मैंने 3 साल में ये 900 रुपए तो इकट्ठे कर लिए। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे कि भाई साहब जब मैं वहां गई आज दुकान पे तो उसने कहा नहीं साहब अब तो 900 वाला पंखा 1200 का हो गया, तब मुझे 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा और शायद तब तक वो 1200 का 1300 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं उस महिला की पृष्ठभूमि कैसी रही होगी। फिर भी उसकी सोशल रिलेवेंस देखिए, उसका सामाजिक सरोकार देखिए कि नहीं मेरे पास शायद उसने 1 रुपया रोज इकट्ठा किया, लेकिन किया कि मुझे किसी को कुछ दे करके जाना है। ये मतलब उस महिला को नमन। उसके जो पैसे थे वो हमारे लिए 9 लाख या 9 करोड़ के बराबर थे। आज भी जब मैं ये दृष्टांत बताता हूं तो शायद मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। ये सोशल रिलेवेंस, ये छोटा सा अंश कहीं ना कहीं हमें जरूर आना चाहिए। मैं एक जब भी कॉलेजेस में एड्रेस करता हूं एक अपील सबसे करता हूं, हम एक नेकी की डायरी बनाएं। नेकी की डायरी, इस डायरी में हम जब भी कुछ अच्छा करें, निस्वार्थ करें और अच्छा करें। अपने दोस्त के लिए किया या रिश्तेदार के लिए किया वो नहीं, उसके लिए तो रिटर्न्स में मुझे गेन्स मिल जाएंगे वापस से, वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन बिना इन्वेस्टमेंट मोड के मैंने अगर कुछ अच्छा काम किया है, कुछ भी अच्छा काम, किसी अंधे को सड़क पार कराई, किसी अनजान को खाना खिलाया, कुछ भी किया, जब भी मैंने कोई नेक काम किया उस डायरी में नोट कर लें।
1 मिनट के लिए जरा सोचिए, पिछले 2 महीने में आपके पास कितनी एंट्रीज हैं आपकी डायरी में? शायद 1 या शायद 1 भी नहीं। ऐसी डायरी जरूर बनाएं। ये डायरी आपको मोटिवेट करेगी, उसके खाली पन्ने आपको मोटिवेट करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ करना है। ये नेकी की डायरी, खुशी होगी आपको उसमें कुछ इबारतें लिखी देख करके, कुछ चीजें लिखी देख करके, और जब जीवन में आप पीछे मुड़ के देखेंगे, जब वो डायरी बड़ी हो जाएगी और उसके कुछ पन्ने, कुछ के कुछ सफ़े भरे हुए होंगे, तो आपको लगेगा कि आपका जीवन शायद कुछ सार्थक रहा। अपनी बात को कंक्लूड करने के पहले एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा, जिसे हम अक्सर कर्म कहते हैं, है ना? कर्म कहते हैं या कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं, और अलग अलग, आई थिंक देयर इज नो रिलीजन जिसमें लॉ ऑफ कर्मा नहीं है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ इसको बहुत एक्सप्लिसिटली, बहुत साफ तौर पे इस कर्म के सिद्धांत को समझाया गया है। इस सिद्धांत, कर्म फल का सिद्धांत यह है कि जो आपको कर्म किया है आपने, आपको उसका फल भुगतना ही होगा, आपको उसका फल भुगतना ही होगा। जिसने इस सृष्टि को रचा है, चाहे भगवान माने चाहे नेचर माने, वो बहुत बहुत जुडिशियस है। क्या आप ऐसा भगवान चाहेंगे जो अनैतिक हो, जो न्यायपूर्ण नहीं हो, जो मेरे प्रसाद चढ़ाने पर मेरे नंबर 10 में 10 की जगह 20 कर देगा, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने केवल उसको एक नारियल चढ़ाया और वो मुझे पास कर देगा? क्या आप ऐसा भगवान चाहेंगे? क्या आप सृष्टि का रचयिता चाहेंगे कि ऐसा आदमी हो? नहीं, वो बहुत न्यायपूर्ण है, उसके पास हर पुण्य और हर पाप का दर्ज किया हुआ है, और वही कर्म आपको आपके फल दिलाते हैं। जिसे आप भाग्य कहते हैं, वो भाग्य भी कुछ नहीं है, वो आपके पुराने कर्मों का उदय है। जैसे हम एक धनिया लगाते हैं और शायद महीने भर में धनिया का फल मिल जाता है हमको। अगर मैं आम लगाता हूं, मुझे 5 साल बाद फल मिलता है, पपीता लगाता हूं 2 साल का फल मिलता है। ठीक इसी तरह से हर कर्म का भी उदय का एक समय होता है, वो कर्म तभी जाकर के उदय होगा, उसके पहले न उसके बाद में। हर चीज इतनी लॉजिकली ड्रॉन है कि न हम इसमें कुछ हेरफेर कर सकते हैं, न हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए वो हाथ जोड़ना, वो गीत गाना, वो भजन गाना स्वार्थ से बंद कीजिए। हाँ, निस्वार्थ भाव से अगर आप उसकी कुछ वंदना कर रहे हैं, उसकी सृष्टि का गुणगान कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। खैर, तो सवाल ये उठता है कि आप जो भी कर्म करेंगे आपको उसी का फल मिलेगा। अब ये जरूर है कि वो कर्म का फल अभी अभी परिलक्षित होगा या उसके आड़े कुछ पुराना फल बीच में आ जाएगा, ये प्रारब्ध जिसको हम कहते हैं वो होगा। अभी अगर हम इस सिद्धांत को समझ लें तो शायद हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे और इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरे कारण हो रहा है, बुरा हो रहा है तो मेरे कारण हो रहा है। नॉर्मली हमारी फितरत ये नहीं होती, हम अच्छा है तो मेरा, बुरा है तो किसी और का, यही हम करते आए। इनफैक्ट मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है, ये इंसान की फितरत है कि हर चीज पे वो अपना नाम का ठप्पा लगा देता है, ये मैंने किया है। मैं एक बात करूंगा ऐसे ही डेविएट करते हुए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किसने दिए? लॉज ऑफ मोशन न्यूटन ने, ठीक है। आर्किमिडीज लॉ किसने दिया? आर्किमिडीज ने। कौन थे ये? ग्रेट साइंटिस्ट, सुपर ह्यूमंस, महामानव, है ना, बहुत वंदनीय। लेकिन जरा कभी सोचा है क्या इन्होंने दिया या इन्होंने केवल ढूंढा? ये नियम इन्होंने नहीं बनाए, नियम तो किसी और ने बनाए, नियम नेचर ने बनाए, नियम उस ऑलमाइटी ने बनाए हैं। इन्होंने तो केवल ढूंढने का काम कर दिया। जब ढूंढने वाले को आप वो दर्जा देते हो तो जरा सोचिए उस बनाने वाले का दर्जा क्या होगा। तो उससे कुछ गलत की अपेक्षा नहीं करें। मैं बार बार कह रहा हूं, उससे गलत की अपेक्षा करना अपने आप को झुटलाना है, और जो होता है उसको एक्सेप्ट करें। एक एग्जाम्पल मेरे अनुभव से, लकीली माथुर साहब, अग्रवाल साहब सभी या कभी न कभी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन रह चुके हैं, और मुझे भी 1 साल के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब भी कोई बच्चा आता था और गोल्ड मेडल कम्युनिकेशन में आते थे और या अच्छे आते थे या ऑनर्स आ जाती थी, तो आकर के रूम में सीधा, सर मेरे फर्स्ट डिवीजन आया है, सर मेरे ऑनर्स आई है। वो सक्सेस को ओन करते थे, मैंने किया इसलिए ये हुआ, है ना। और जब भी कोई बच्चा आता था जिसको फेल हो गया, वो आके कभी भी ये नहीं कहता सर मैं फेल हो गया, वो कहता सर यूनिवर्सिटी ने बैक दे दी। ये कैसी दुनिया है? आप सक्सेस को तो ओन करने को तैयार है और फेलियर्स को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी और पे डाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने बैक दे दी, यूनिवर्सिटी क्यों बैक देने लगा है? तो जो भी आपका आउटकम है उसको एक्सेप्ट करें,
एक आखिरी बात, एक कहानी जो मुझे बहुत प्रिय है और मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, आर्थर एश स्टोरी। वो एक्सेप्ट द आउटकम के बारे में ही है। आपकी जनरेशन में कम लोग जानते होंगे, आर्थर एश हमारी जनरेशन में सभी लोग, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं। आर्थर एश वॉज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ टेनिस। ही वॉज ब्लैक। ब्लैक्स में बहुत कम लोग टेनिस खेल पाते हैं और कम लोग ऊपर तक आ पाते हैं। सो ही वॉज द फर्स्ट विंबलडन ब्लैक चैंपियन। विंबलडन टूर्नामेंट उसने जीता, यूएस का प्लेयर था और विंबलडन टूर्नामेंट उसने जीता। आप समझ सकते हैं उसका दर्जा क्या होगा, उसकी फैन फॉलोइंग क्या होगी, जबरदस्त। और करोड़ों लोग उसके दीवाने। शायद जितना हम सचिन या विराट के या धोनी के बारे में सोच सकते हैं, उससे ज्यादा। यही आर्थर एश को कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान में कुछ बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। इन्हीं आर्थर एश को बाद में कभी ब्लड चढ़ाया गया और उस ब्लड के दौरान चढ़ाने से उसको कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं। सो आर्थर एश वॉज लिटरली ऑन द डेथ बेड। हॉस्पिटल में पलंग पर पड़े, केवल मृत्यु का इंतजार। ऐसी परिस्थिति में जो फैंस थे वो बड़े व्याकुल हो गए, बड़े विचलित हो गए और उन्होंने तमाम बातें करना शुरू किया। एक फैन ने उसको एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने भगवान को गाली दी। उसने कहा, ये कैसा है आर्थर, व्हाई यू आर सच ए नोबल पर्सन, यू आर सच ए गुड प्लेयर एंड अबव दैट यू आर अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। शानदार आदमी हो आप, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। तो ये कैसा भगवान है जो ये कर रहा है, ये कैसा न्याय व्यवस्था है उसकी। उसने भगवान को 2-4 गालियां दी। आर्थर बीइंग अ वेरी नोबल पर्सन रेड द लेटर एंड रिप्लाइड इट। उस रिप्लाई को कहते हैं वाई मी। उस रिप्लाई का नाम है वाई मी। उसमें आर्थर ने कुछ चीजें लिखी जो मैं यहां बताता हूं। आर्थर ने कहा, एवरी ईयर बिलियंस और करोड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट प्लेइंग टेनिस। आउट ऑफ करोड्स ओनली अ लैक ऑफ चिल्ड्रन आर एबल टू कंटिन्यू देयर पैशन ऑफ प्लेइंग टेनिस। कुछ लाख लोग ही लगातार खेल पाते हैं। आउट ऑफ दैट only thousands would reach national level. Out of that, only few hundreds would reach professional circuits. उनमें से कुछ 100 लोग ही होते हैं जो ग्रैंड स्लैम्स खेल पाते हैं। उन 100 में से केवल 64 लोग ऐसे होते हैं जो विंबलडन खेल पाते हैं। उन 64 में से केवल 8 लोग ऐसे होते हैं जो क्वार्टर फाइनल खेल पाते हैं। केवल 4 ऐसे होते हैं जो सेमीफाइनल खेल पाते हैं और फाइनल में केवल 2 प्लेयर्स होते हैं। और इस प्लेनेट पे देयर इज ओनली 1 पर्सन ऑन द अर्थ जो इस प्लेनेट पे ट्रॉफी को हाथ ऊंचे करके ऐसे लेके खड़ा होता है। जब उस क्षण मैं उस ट्रॉफी को ऐसे लेके खड़ा था, तब मैंने उससे नहीं पूछा व्हाई मी, कैन आई आस्क द क्वेश्चन व्हाई मी नाउ। जब मेरे उस सफलता के क्षण पे मैंने उससे ये नहीं पूछा कि तूने मुझे ही क्यों चुना, तो क्या मैं आज ये सवाल पूछ सकता हूं कि मैं ही क्यों। चलिए, अपनी काफी लंबा हो गया है, अपनी बात को मैं समराइज करते हुए समाप्त करता हूं। ये कामना करता हूं कि आप सभी बहुत सफल हों, आपका जीवन आनंदपूर्ण हो। ये दुनिया एक बहुत बड़ा पुलाव है। पुलाव में करोड़ों चावल के दाने हैं। हमारा कोई ज्यादा योगदान तो नहीं, पर हम इस पुलाव के अंदर, मैं यही कामना करता हूं, इस पुलाव के अंदर आप एक बहुत स्वादिष्ट, बहुत खुशबूदार चावल का दाना बन के रहेंगे तो हमें खुशी होगी। अगर आप एक साधारण चावल का दाना बन के रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा, इस पुलाव में कंकर कभी मत बनिएगा, क्योंकि ये एक कंकर पूरे पुलाव का मजा खराब कर देगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भंडारी साहब। बच्चों ने जितने कमेंट्स आपके इस पे दिए उतने अभी तक किसी सेशन पे नहीं दिए। स्पेल बाउंड होके बच्चे सुन रहे थे, लगातार लिख रहे थे। सभी बच्चों ने लाइक किया, जितने भी बच्चे जुड़े, और मैं समझता हूं मैंने भी आज बहुत कुछ सीखा आपके इस उद्बोधन से। और हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि आज आपने समय दिया। और आप, चलिए, भाग्य को तो नहीं कह रहे हैं, पर हाँ, हम भगवान को जरूर धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपसे ऐसे प्रेरणास्पद हमें वचन कह रहा है। मैं रंजन माहेश्वरी जी से, अगर वो बोल सकते हैं 2 शब्द, तो उनके तरफ से उनको आमंत्रित करता हूँ। माहेश्वरी सर। धन्यवाद सर।
और प्रवीण बहुत पुराने हमारे मित्र हैं और सौभाग्य हमारा कि उनका दोबारा से सुनने का मौका मिला, जैसा माथुर साहब ने भी पहले कहा था। और क्या संयोग की बात है कि जिस समय वे जीवन की बात कर रहे थे, कि जीवन के खेल की बात, उस समय मैं यहाँ डॉक्टर से आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि मेरी मदर की अभी सर्जरी है और रिस्क लेने को वो तैयार नहीं थे, उनका ईसीजी में थोड़ा गड़बड़ था। तो मैं उनसे उलझ रहा था कि भाई कर डालो सर्जरी, ये ज़्यादा जरूरी है ईसीजी से। और अब इस दौरान जबकि प्रवीण का व्याख्यान था, मदर की सर्जरी हो गई और अगर आप लोग देख सकते हैं तो वो मेरे साथ पीछे लेटी हुई हैं। इस समय मैं उनके पोस्ट ऑपरेटिव रूम से ही बात कर रहा हूँ इस समय। सर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं मिस नहीं करना चाहता था जी। मेरी तरफ से आंटी को शुभकामनाएं दें सर, और जल्दी स्वस्थ होकर के वो लौटे। बहुत स्नेह रहा है आपके परिवार का मेरे प्रति, तो मैं यही कामना करता हूँ। जी जी जी। और मैं मतलब भाग्य की बात है कि आपका व्याख्यान बिल्कुल उपयुक्त स्थान पर सुन रहा था, जो संबल बढ़ाने के लिए आदमी के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए हृदय के गहन तल से परिवार की ओर से और दोनों परिवारों की ओर से, आरटीयू परिवार की ओर से भी, अपने खुद के परिवार की ओर से भी आपको हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्याख्यान आख्यान हम लोग बार बार सुनते रहेंगे। और जो अब ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव की जो चीज है, इनमें जो गहराई होती है वो वाकई में किसी पढ़े लिखे से या किताब से हमें वो नहीं मिल पाता। जो आपने जिस तरीके से गूढ़ शब्दों में और जितने आसान तरीके से इसको प्रस्तुत किया, मार्वेलस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने परिवार को, आप अभी भी आप हमारे परिवार के, तो आपने हमारे परिवार को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत आभार। Thank you very much, sir. It was all the way my privilege to be here once again with you people. मैं जानता हूँ रंजन जी, प्रवीण जी बड़े स्टेचर है, मैं कुछ भी नहीं, पर जैसा जो हुआ आपने अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच। सभी स्टूडेंट्स ने भी ये चीज लिखी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि आपकी हम्बलनेस आपको और ऊंचा दर्जा दे रही है, और इतने बड़े आदमी होके इतने अच्छे विचार। मैं तो यही कहूंगा कि पूरे इंडक्शन प्रोग्राम का साथ आपने इस 1 घंटे में स्टूडेंट्स को दे दिया। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं सभी को आपने एड्रेस कर दिया। हम अपनी तरफ से, पर्सनल रूप से और संस्था की तरफ से एक बार पुनः आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद भंडारी साहब। और मैं ये चाहूंगा जो स्टूडेंट्स मुझे सुन पा रहे हैं, जब भी आप लोग आएंगे ऑफ कैंपस, हम भंडारी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी रूबरू आपसे मिलने का मौका हमें दें, समय दें। तो बच्चों की तरफ से मैं एक प्रार्थना आपसे जरूर करूंगा कि जब भी कोरोना हमें अलाउ करे, आप बच्चों से जरूर व्यक्तिगत मिलने का समय दें। तो अच्छा सर, ये तो आप मुझे जानते हैं और आपका अधिकार है कि मुझे 15 मिनट के नोटिस पे आप कभी भी बुला सकते हैं, है ना सर? तो इसे कहने की जरूरत है। जी सर, जी सर। तो मैं आज के सेशन की समाप्ति की घोषणा करता हूं, और अब स्टूडेंट्स 3:30 बजे जो उनके रेगुलर सेशंस हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं स्टूडेंट्स को एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, सभी मेंटर्स को जो यहाँ आज मौजूद हैं, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी उनको डिटेल्स दी हुई हैं, फिर भी दोबारा दे दी जाएंगी कि कल डिबेट कंपटीशन है, कल और परसों। कल डिबेट कंपटीशन के लिए हम मेंटर्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको टॉपिक आज दे दें, और परसों एक्सटेम्पोर डिबेट कॉम्पिटिशन है। तो कल के साथ ही हमारे कॉम्पिटिशन्स चालू हो रहे हैं, तो आप कृपया अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। आप सबके वीडियोस डेली मुझे मिल रहे हैं, काफी मेंटर्स मुझे भेज रहे हैं आपके द्वारा बनाए गए। कल कुछ बच्चों ने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ने का वीडियो दिया, हमें बहुत प्रेरणा हुई कि आप विविध रूप से कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी भंडारी सर बार बार बोल रहे थे कि गिटार में तार कई होते हैं तभी साज के स्वर अच्छे निकलते हैं, पर किस तार को कब बजाना है ये आप लोगों की प्रायोरिटीज में करना है निश्चय। तो पर अभी आप विभिन्न तार जो आपके गिटार में हैं, आपके आयाम जो आपको आता है, या जो आप अपनी रुचि संवर्धन कर सकते हैं, उनको करिए। ये 3-4 दिन हम आपको और प्रेरणा देंगे कि आपकी जो भी रुचियां हैं, जो भी हॉबीज हैं,
उनको बढ़ाएं। गार्डनिंग करने की वीडियोस मैंने देखे, खेत में काम करने के वीडियोस आपके देखे, बहुत अच्छा लगा। आप जो भी ग्रामीण परिवेश से हैं, अपने परिवार के साथ खेत में खलिहान में काम करिए। और जैसा अभी सर ने कहा, भंडारी सर ने कहा, नेकी की एक डायरी बनाए, नेकी की डायरी जरूर बनाएं। ये हम आपके करिकुलम में भी डाल दिया गया है और आपसे वैसे भी अपेक्षा की जाती है जीवन में। जैसे इन्होंने कहा, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमेशा पाएंगे कि नेकी करेंगे तो हमेशा आपको जो आपका अल्लाह है, जो आपका भगवान है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ और 3:30 बजे अपने मेंटर्स के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।